Welcome back to our lecture series of ring theory. We have already discussed the algebraic structure, ring, subring, integral domain and fields. इनसे रिलेटेड हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और स्टेटमेंट्स को डिस्कस किए हैं. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग को डिस्कस करेंगे. इस टॉपिक को समझने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग. हमने लास्ट लेक्चर में इस फील्ड को डिस्कस किया था Z3I. Okay, and that was the set of the form a plus b iota, where this a and b were the element of Z3. ओके जब हम इन सारे इस तरीके के ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो भी रिजल्टेंट एलिमेंट है, चाहे वो आफ्टर एडिशन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, दे वर रिड्यूस टू द मॉड्यूलो ऑपरेशन 3, है ना. अब हम अगर इस ऑपरेशन के लिए बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि चाहे इसका कौन सा भी एलिमेंट लें, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई चूज एन एलिमेंट आइथा, और let me take one more example, 2 1 plus 2, and then let us choose 2. Okay, these all are element of Z3I. Now if I add this I thrice, that is I plus I, and similarly if I add this 1 plus 2 iota, which is element of Z3I, if we add this 3 times, 1 plus 2I, 1 plus 2I and 1 plus 2I, right? And then we have that if we add this 2 plus 2 plus 2. ओके, तो हर एक एलिमेंट को हमने 3 टाइम्स ऐड किया है. हम 3 टाइम ऐड करें या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों बातें सेम ही तो हैं. 1 plus 2I and this will be 3 times 2, right? Now if you see कि जब हम इनको इस 3 आइटा को, क्योंकि 3 इन Z3 इज सेम एज 0, है ना, ये 0 की इक्विवेलेंस क्लास में जाता है. तो Z3 में 3 का मीनिंग क्या है? 0. सो वी कैन राइट दिस एलिमेंट एज 0. अगेन जब हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल हैव 3 plus 6 iota. अगेन 3 and 6 both are 0 for this Z3 algebraic set. So we will have this is also equals to 0, and of course this will be 6 and it will be also equals to 0. So here you can see in this particular set we have a number, this 3, जिसके लिए जब हम इस 3 को इस Z3 के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमें 0 ही मिल रहा है. क्या ऐसा 1 के साथ हो रहा है? 1 के साथ मतलब क्या हम हर एक एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करें तब हमें 0 मिल रहा है? द आंसर इज नो, है ना. जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी क्या हमें हर एक एलिमेंट का इस तरीके का प्रोडक्ट 0 मिल रहा है? द आंसर इज नो. दैट इज दिस 3 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच वी आर हैविंग दिस सिनेरियो सच दैट जब भी हम इस स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है. ऐसा नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करने के बाद, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 0 मिल रहा है ना. दिस मल्टीप्लीकेशन इज द एडिशन ऑफ, जैसे हमने यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब हमने आयटा को 3 टाइम ऐड करना है. देन रिड्यूस द रिजल्टेंट एलिमेंट विद द मॉड्यूलो 3 ऑपरेशन. ओके, सो व्हाट आई वांट टू से दैट इज we can say, so for all x belongs to Z3I, we can say that 3x, that is of course equals to x plus x plus x, and this is always equals to 0 since this addition is under the modulo 3 operation. Okay, so this is about one example. Let me tell you one or two more so that we can easily understand the concept of characteristic of a ring. Okay, now come to the another part in which we are going to discuss the suppose हमने बात की थी in Z6 we have a subring. हमने इसे प्रूफ भी किया था subring, that is 0 2 and 4 with the addition modulo 6 operation and multiplication modulo 6 operation. Okay, so this was a subring और हमें पता था 4 इसका unity element है. Again if you multiply the every element by a positive number, जैसे अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो तो पॉजिटिव नंबर ही नहीं है, so we will always exclude the 0 integer. Okay, now if we multiply by 1, then you can see when we multiply by 1 2, then we will have 2. We are not having the 0 with these operations, and again the same thing is true for 2 also. Okay,
But when we come to 3, then you can see that 0 times 3, you can see we add 0 plus 0 plus 0, and then you have 2 plus 2 plus 2, and then 4 plus 4 plus 4. Or simply you can see that if we write time 0 time 2 time 4, and then we are writing 3. So this is 3 times 0, 3 times 2, and 3 times 4, right? So here you can see after multiplying by 3 and then reduce with the addition modulo 6, then we are having this is 0, this will be also 0, and this will be also 0. And we have seen कि 1 और 2 के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है. इसका मतलब इस सब रिंग के लिए जो पर्टिकुलरली एक रिंग है, इस रिंग के लिए हमारे पास एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है लिस्ट. ऑब्वियसली अगर ये 3 के लिए है तो 3 के हर एक मल्टीपल के लिए भी ये चीज़ ट्रू ही होगी. जैसे कि अगर आप 3 के लिए बात करें तो नोट हर एक मल्टीपल के लिए जो कि 6 को भी डिवाइड करे, राइट? तो जैसे हम 3 के लिए बात करें, द सेम थिंग इज ट्रू फॉर 6 ऑल्सो, द सेम थिंग इज ट्रू फॉर 12 also, and the same thing is true for 18 also, and so on. तो इसका मतलब इन सभी नंबर में से we want to choose the least positive integer for which we are having this scenario. Okay, इसी तरीके से हम ऐसा एक नंबर आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसको जब रिंग के हर एक एलिमेंट से जब हम मल्टीप्लाई करें या फिर उतने टाइम ऐड करें तो हमें 0 एलिमेंट मिल जाए. ओके, नाउ अगेन लेट मी रिपीट, दिस 0 एलिमेंट इज द एडिटिव आइडेंटिटी. तो जब भी आपके पास ऑपरेशन अलग हो तो इसका मतलब यहाँ पर 0 का मीनिंग क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. लेट मी टेल यू दैट इन Z12, ऑब्वियसली Z12 में हर एक एलिमेंट को जब 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा. दिस सबरिंग 0, 3, 6 and 9, right? With the addition modulo 12 and multiplication modulo 12 operation. Okay, now if you think, then if you multiply each element by 4, then you can have that 0 time, that is 0 plus 0 plus 0 plus 0. Okay, then you add 3 plus 3 plus 3 plus 3, and then we can write 6 plus 6 plus 6, and then 9 plus 9 plus 9 plus 9. And obviously this is 4 times 0, this is 3 times 0, this is 4 times 3, this is 4 times 6, and this is 4 times 9, right? So this is 4 times 0, 4 times 3, 4 times 6, and 4 times 9. And in each case you will identify कि ये वैल्यू भी इस ऑपरेशन के साथ 0 है, then this will be also 0, this will be also 0, and the same thing for this. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिंग में कभी कभी ऐसे नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं या फिर रिंग के लिए ऐसे पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं जिससे कि जब हम उतने टाइम हर एक एलिमेंट को ऐड करें तो हमें हमेशा 0, दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिल रहा है. तो अगर किसी रिंग के लिए ऐसे पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसी नंबर को हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग बोलते हैं. ठीक है, और जब कभी भी ऐसा कोई लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ना करे तब हम बोलते हैं कि वो रिंग 0 कैरेक्टरिस्टिक वाली रिंग है. ठीक है, जैसे कि अगर हम सेट ऑफ इंटीजर के बारे में बात करें तो वो अपने आप में एक रिंग है, बट क्या कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर है जिससे कि हम हर एक इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 मिल जाए? सो द आंसर इज नो. दैट्स व्हाई वी राइट दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट रिंग इज 0. ओके, अब यहां पे जो 0 है वो इंटीजर 0 है. ठीक है, और जब हम यहां जब 0 लिख रहे हैं दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, सो दैट इज द डिफरेंट थिंग, बोथ आर द डिफरेंट थिंग, है ना. आपकी जो सिलेबस में वहां पर ऑपरेशन फिक्स्ड है, फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन एंड द सेकंड ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सो इन ऑल 3 एग्जांपल्स वी हैव आइडेंटिफाइड दैट Z3i के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक है,
Z6 के लिए भी 3 कैरेक्टरिस्टिक है और Z12 के लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक है। यू कैन इजीली वेरीफाई कि जब हम इसे 1, 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे एलिमेंट जीरो नहीं बनेंगे, है ना। 1 में ये 3 जीरो नहीं बनेगा, 2 में भी 3 जीरो नहीं बनेगा, और जब हम 3 लेंगे तो 3 में भी ये 3 जीरो नहीं बनेगा। ओके, सो यू कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई सम नंबर विच इज नॉट बीइंग जीरो. Okay, then we have the first number as first positive integer is 4, for which we are having the zero number. Okay, so you can see for Z12, in Z12 for the subring this, the 4 is the characteristic. Okay, so now we are able to write the definition of characteristic of a ring. So let me write definition, and this definition is about characteristic of a ring, of a ring. ठीक है, so the characteristic of a ring R is the, this word is important, okay, is the least positive integer int such that we have that nx is equals to 0 for all x belongs to the ring R. ठीक है, अब अगर ऐसा कोई n एग्जिस्ट ना करे देन, सो इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट then we say that R has characteristic 0. Okay, and we denote the characteristic by the characteristic of R is denoted by char R. Okay, the c is small. Okay, char, then we write the ring. So this is the notation for characteristic of R. तो अगर n है तो we write char of R is equals to n, और अगर 0 है तो we write is equals to 0. Okay, now we know that the characteristic of integers, जैसे कि if I write the characteristic of integer, ring of integer is 0. ठीक है, इस लेक्चर में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग और कुछ ऐसी हम कंसेप्ट देखने वाले हैं जिसको पढ़ के आप बहुत सरप्राइज होंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसमें एंड ऑफ द लेक्चर जाएंगे जहाँ पर हम इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अब तक या फिर आज तक हमने जितने भी इक्वेशन सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किए हैं उनके पीछे क्या रीज़न क्या है, उनके पीछे इनडायरेक्ट कंसेप्ट इंटीग्रल डोमेन का ही होता है। ठीक है, so the ring of integer has characteristic 0 and the ring Z2x has characteristic 2. ठीक है, एंड etc. तो इस तरीके से हम आगे भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। आई विल प्रोवाइड यू अ टेबल टू। ओके, नाउ हमने बात की कि जब हम रिंग की बात करते हैं देन इट विल सेटिस्फाइड 6 प्रॉपर्टीज, राइट।
बट जब जैसे ही मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिगार्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होता है तो हम बोलते हैं दैट रिंग इज रिंग विद यूनिटी, ओके। और जैसे ही कम्यूटेटिव हो जाती है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन तब हम बोलते हैं कि द रिंग इज कम्यूटेटिव। और जब हम दोनों केस को एक साथ डिस्कस करते हैं तो हम बोलते हैं दैट दिस रिंग इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। जैसे ही हमारे पास रिंग में यूनिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस आता है तो उस केस में द डिस्कशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बिकम्स मोर इजियर, ओके। सो वी कैन डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग थ्रू द यूनिटी ऑल्सो, है ना। और ये बात कब ट्रू है, जब रिंग में यूनिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो, देन ओनली वी कैन डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग थ्रू द यूनिटी एलिमेंट। So the next theorem is about the characteristic of a ring with unity. So theorem 13.3, and this will tell us about the characteristic of a ring with unity, okay. And it says that let R be a ring with unity 1, okay. Now if 1 has infinite order under addition, then the characteristic of R इज 0, ठीक है। तो अगर एडिशन के अंडर में 1 का इनफाइनाइट ऑर्डर है तो उस केस में दिस R विल बी हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक 0, ओके। एंड अगेन if 1 has order n under addition, then characteristic of R is equals to n, ठीक है। So this is about this theorem.